Hello students, Hemant Sir is here. So today we are going to start to understand the nerve systems and their types. So in previous video we have already understood the nerve cell and nerve cells, the function of the nerve cell and their types, that is classification. So now we are going to understand the nerve systems types today. Okay, so we have three types of nerve system which works in our body and they control all other activities which are performed by our body. Okay, so first we have central nerve system. Central nerve system. In short हम इसको CNS भी कहते हैं. What is CNS? It is central nerve system. Second we have peripheral nerve system. In short हम इसको PNS भी कहते हैं. What is PNS? It is peripheral nerve system. And last but not the least is automated या ऑटोमेटिक भी कह सकते हैं. इट इज ऑटोमेटेड नर्व सिस्टम एंड इसको हम ANS से रिप्रेजेंट करते हैं. ANS. व्हाट इज ANS? इट इज ऑटोमेटेड नर्व सिस्टम. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेंट्रल नर्व सिस्टम. ओके, सो CNS. See, central nerve system is the main controlling part of our body is brain. So central nerve system includes brain and spinal cord. Spinal cord, it is the very thin thread-like structure which present in our vertebral columns. Okay, so इसीलिए हम इस कॉर्ड को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. Okay, so now let's start the discussing about the central nerve system. So in diagram, as you see, the main controlling part of our nerve system is the brain. The brain is the main controlling part of the nerve system and it is safely located in the cranial cavity, that is our skull. Skull यानी हमारे जो सर के ऊपर जो बोन का ढांचा है हम उसको स्कल बोलते हैं और स्कल के अंदर में हमारा जो ब्रेन है वो कैसा है? प्रोटेक्टेड है. द स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. और वर्टिब्रल कॉलम को कौन? हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को. इन द स्पेस बिटवीन द कैविटी in the delicate nerve system and its bony covering are protective layers are called meninges. So हमारे ब्रेन का जो स्कल वाला पार्ट है और ब्रेन के बीच में जो कैविटी है वो फील होती है किससे? मेनिंजिस से. और मेनिंजिस एक्चुअली में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस सब्सटेंस से बना हुआ होता है जो रिक्वायर्ड समय पर न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने का काम करता है. Cavity present in various part of the brain are called as ventricles. और जो हमारे ब्रेन में जो कैविटी होती है हम उसको बोलते हैं ventricles. Whereas the long tubular cavity of the spinal cord is called as central canal. The long cavity in our brain is called as central canal. The ventricles, central canal and the space between the meninges are filled with the cerebrospinal fluid. This fluid supplies the nutrition to the central nerve system and protect from the mechanical shock. Okay, then see, as you see the human brain diagram, the brain of the adult human weight is about 1300 to 1400 grams and it consists of approximately 100 billions of the न्यूरॉन्स. हमारे ब्रेन में अबाउट 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. द लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल द राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड the right side of the brain controls the left side part of the body.
इन एडिशन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स आवर स्पीच, हमारी जो स्पीच है, जो हम बोल रहे हैं, इसको हमारा लेफ्ट साइड वाला ब्रेन कंट्रोल करता है. एंड कन्वर्सेशन, राइटिंग, लॉजिकल थिंकिंग एक्सेट्रा विच इज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन. Whereas the right side control the artistic ability. जो पेंटर होते हैं, सिंगर होते हैं, है ना, इनमें जो आर्टिस्टिक जो एक्टिविटी होती है ये राइट ब्रेन के कारण होती है. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जिसमें से फर्स्ट है सेरिब्रम. सो व्हाट इज सेरिब्रम? एज यू सी इन डायग्राम, it is situated at the lower side and back side of the brain. This is the largest part of our brain and consists of two cerebral hemisphere. ये दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ. These hemisphere are joined to each other with the help of tough and fiber-like nerve tract. The cerebrum occupies 2/3 of the brain. जो cerebrum है एक्चुअल में हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है. Hence it is also called as the large brain. इसका साइज बहुत ज्यादा होता है as compared to other part of the brain. That's why it is called as the large brain. Its surface has deep irregular ridges and grooves which are called as convolutions. हम इसको बोलते हैं convolution. And this convolution increases the surface area of the cerebrum and therefore the large number of nerve cells can becomes accommodate. Okay, so this is all about the cerebrum. Now cerebellum. So as in diagram you can see it is the above side of the brain called cerebellum. Cerebellum is situated at the back posterior side of the brain. This is the smaller part of the brain situated below the cerebrum. ये cerebrum के बिल्कुल below में present होगा. At the back of the cranial cavity. Its surface shows the shallow grooves instead the deep convolution. इनमें convolutions जो deep हमारे large brain में होते हैं इनमें absent होता है, but इनमें shallow grooves present होते हैं. Next part of the brain is called medulla oblongata. This is the hindmost part of the brain. ये हमारे ब्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट होता है और इसके 2 ट्रायंगुलर स्वोलन स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम पिरामिड्स कहते हैं. एंड पिरामिड्स ऑन द अपर साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा. द मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स एज द स्पाइनल कॉर्ड. और जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है हमारा कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा टू द ब्रेन. Then we have spinal cord. The spinal cord is a part of the central nerve system and it is held within the vertebral column. Spinal cord हमारे vertebral column में protected होती है. It is slightly thick but gradually tapers down at the end. स्टार्टिंग में जब ब्रेन से स्टार्ट होता है तो ये थोड़ी थिक होती है एंड ये धीरे धीरे थिन होती जाती है टुवर्ड द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. This is the thread-like fibrous structure and its end. इसका जो end होता है एक्चुअली में कैसा होता है? fibrous type होता है. It is a thread-like structure. That's why it is called as the phyllium terminal. Okay, इसके जो end वाला रीजन होता है it is a fibrous. वहां पर fiber-like structure होते हैं जो peripheral nerve system से जो impulses आते हैं उनको collect करने का काम करते हैं. So in diagram as you can see there are the different parts of the spinal cord which are given in details. Okay, so आपको क्या करना है? आपको ब्रेन के जो पार्ट्स है उनको ड्रॉ करके देखना है once, twice, thrice जितने बार हो सके. Okay, so that you can understand each part of the brain प्रिसाइजली. ओके, और इसके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने के लिए आते हैं. सो आपको उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके एक बार 2 बार ड्रॉ करके देखना है विथ वेल लेबल. ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.